हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टैट लैब्स। आज की वीडियो में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर राइटिंग द ऑटोमेशन और कोडिंग, बल्कि आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही क्रिटिकल ये टॉपिक है। अगर आप सीनियर क्यूए या ऑटोमेशन लीड बनना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको टिप्स पे होना ही चाहिए। Okay, so let's get started. Before starting this video, if you are new to this channel, then please subscribe and like this video and share across in your group. Okay, and one more thing, if you are new and if you want to know what is the difference between when we are writing the ChromeDriver is equal to new ChromeDriver or WebDriver is equal to new ChromeDriver. So what is the difference and which are the best practices? So you can watch this video. This is only for 5 minutes and I uh, made this video in detail for this particular only concept. Okay, so before let's get started. पहले हम बात करने वाले हैं और टॉप लेवल पे हमारा जो ड्राइवर हायरार्की में सबसे टॉप लेवल पे क्या होता है। ओके, टॉप लेवल पे हमारा जो है सर्च कॉन्टेक्स्ट होता है। ओके, सर्च कॉन्टेक्स्ट इज एन इंटरफेस जिसको हमने नाम दिया है रूट इंटरफेस। सबसे टॉप पे क्या है सर्च कॉन्टेक्स्ट। ये सेलेनियम का रूट इंटरफेस है एंड इसका रोल बहुत ही फोकस्ड है। ओके, ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ एलिमेंट्स को फाइंड करना, जैसे कि फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स मेथड यही डिफाइन किए गए हैं एंड इस लेवल पे ब्राउज़र ओपन हो गया होगा या नहीं होगा इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इसका काम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट लोकेशन को कॉन्ट्रैक्ट सेट करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। if you open the WebDriver method, so you can see like WebDriver is extending the search context and inside the search context only the two method is defined. Find elements that will be returning the list of web element and the find element that is returning the single web element. Okay, you know this is also a very important question for the interview. What is the difference between the find elements and the find elements? Find elements is returning the list of web element, means the matching all the web element with particular locators, and the find element is returning the single web element जो पहले आएगा हायरार्की में, that will return. Okay, and I think now it is clear what is the search context. Search context is an interface and the top level in the Selenium WebDriver hierarchy, and इसका काम सिर्फ एलिमेंट्स को फाइंड करना है, जैसे कि फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स मेथड यही डिफाइन किया। इसका काम सिर्फ एलिमेंट को फाइंड करना है। इस लेवल पे ब्राउज़र ओपन होगा या नहीं होगा इससे इसको कोई मतलब नहीं है, इसका काम सिर्फ ऑब्जेक्ट लोकेशन को कॉन्ट्रैक्ट सेट करना है। इफ़ यू गो दिस इनसाइड दिस कोड, इफ़ यू आर राइटिंग जैसे कि वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर लिखते हैं, वी कैन राइट द सर्च कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, search context, and if you I have written this, and if you want to do some perform some action related to Selenium, you will not able to perform because इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि दो ही एलिमेंट है, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स डिफाइन है फ्रॉम द Selenium point of view. These are Java related methods, so you can ignore this. I think now it's clear, so let me comment it out. नाउ जो हमारा सेकेंड लेवल पे आता है वो होता है वेब ड्राइवर, दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरफेस एंड दैट इज एक्सटेंडिंग टू द सोर्स कॉन्टेक्स्ट। इसके नोटिस करें कि ये सर्च कॉन्टेक्स्ट को एक्सटेंड करता है। मतलब वेब ड्राइवर के पास एलिमेंट्स फाइंड करने की कैपेबिलिटी तो है, बट ये और भी मेथड ऐड करता है ब्राउज़र को कंट्रोल के लिए, जैसे कि गेट मेथड हो गया, क्लोज मेथड, क्विट मेथड
और भी जो Selenium वेब ड्राइवर से रिलेटेड important methods है वो भी प्रोवाइड करता है. Let me show you that as well. So you can see like WebDriver is extending to the search context and it is also an interface, and these methods are provided in the WebDriver. Okay, so you can see like this is an interface and here only the method body is defined, not the code, actual code. So if you open this get URL, you will not able to see the code where the actual code written. I will discuss in some time. So I think it's clear like the WebDriver is also an interface, and ये इसको इसका मतलब ये है कि वेब ड्राइवर के पास एलिमेंट फाइंड करने की, यू कैन सी लाइक दे हियर आल्सो डिफाइन द फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट. सो this also can find the element okay. And ये जो है एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है ब्राउज़र को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि गेट मेथड हो गया, गेट करेंट URL, गेट टाइटल, गेट पेज सोर्स, सो एंड ऑल्सो सम navigation related command code method is providing like the back, forward, refresh, etc., add cookies. So this is the WebDriver interface. Okay, now jump to the third one, remote WebDrivers. So as I see like the WebDriver and the search context is an interface and the only the method body provided there. तो नाउ क्वेश्चन इज कमिंग कि वेब ड्राइवर सिर्फ एक इंटरफेस है तो एक्चुअल कोड कहाँ पे है. सो वो कोड जो है रिमोट वेब ड्राइवर क्लास के अंदर होता है. सो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं. ओके, सो रिमोट वेब ड्राइवर क्या है? रिमोट वेब ड्राइवर एक फॉर्मली इम्प्लीमेंटेड क्लास है. सो ये तीन चीज़ों को मेनली इम्पोर्टेंट करता है और भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है वेब ड्राइवर. लेट मी शो यू दैट एज वेल. WebDrivers, so open that. Yeah, not here. ChromeDrivers, ChromiumDrivers, remote WebDrivers. Yeah. So you can see the remote WebDriver is a class. Okay, and ये जो है मेनली तीन चीज़ों को अपने Selenium, और दे ऑल्सो हैविंग द एक्स्ट्रा दिस वन, बट वी विल टॉक अबाउट ओनली द दीज थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इम्प्लीमेंटिंग बाय द रिमोट वेब ड्राइवर. वन तो हो गया कि वेब ड्राइवर, जो वेब ड्राइवर के अंदर में जितने भी जो फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स है उसका जो है डेफिनीशन जो है रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर में. एंड जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, जैसे कि हमको स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेफ्ट स्क्रॉल, राइट स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, वर्टिकल स्क्रॉल, एंड तो टेक्स स्क्रीनशॉट्स. ओके, सो टेक्स स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए सो ये कहाँ पे डिफाइंड है? तो ये रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर में डिफाइंड है. यू कैन सी रिमोट वेब ड्राइवर हैज़ द एक्चुअल कोड रिटर्न कि लाइक वाई URL नेविगेशन भी हैपन, सेशन आईडी कैसे जनरेट करना है, एरर कैसे हैंडल करना है, कैसे करेंट URL फाइंड करना है, कैसे गेट स्क्रीनशॉट करना है, प्रिंट करना है, फाइंड एलिमेंट्स. these things is written inside the remote web drivers, get page source. You can see in the code, right? So जब भी आप driver.get URL लिखते हैं तो बैकएंड में रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर लिखा लॉजिक एग्जीक्यूट होता है, जो W3C या JSON और रेस्पेक्टिव ब्राउज़र प्रोटोकॉल के थ्रू ब्राउज़र से बात करता है. ओके, सो इसका हमारा काम जो मेन कोड लिखा होता है किसके अंदर होता है? रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर में होता है. So I think it's clear and you will be able to explain like what is WebDriver and difference between the WebDriver, SearchContext and the remote WebDriver, and how they are correlated. Okay, now coming to the browser specific driver. So आप राइट साइड में देखिए कि फायरफॉक्स और सफारी डायरेक्टली जो है क्या करता है, दीज ऑल्सो आर अ क्लास
एंड ये डायरेक्टली किसको एक्सटेंड कर रहा है, रिमोट वेब ड्राइवर को। एंड लेफ्ट में देखिए तो क्रोम और एक एज जो है डायरेक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा है रिमोट वेब ड्राइवर को, बीच में एक लेयर है क्रोमियम ड्राइवर। ऐसा क्यों? क्योंकि गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है दोनों अंडरलाइंग इंजन सेम है उनका, सो दैट इज़ कॉल्ड द क्रोमियम इंजन। एंड कोड डुप्लीकेशन से बचने के लिए सेलेनियम डेवलपर्स ने कॉमन फंक्शनलिटी जैसे कि कनेक्शन हैंडलिंग, परमिशन एक्सेट्रा को क्रोमियम ड्राइवर में रखा है। इसलिए क्रोम ड्राइवर और एज ड्राइवर पहले क्रोमियम ड्राइवर को एक्सटेंड करते हैं और फिर रिमोट वेब ड्राइवर से कनेक्ट होते हैं। एक like a kind of an inheritance, like these two directly not um, uh, what we say directly not extending to the remote web driver, but they are extending to the chromium driver, and then chromium driver is extending to the remote web driver. So let me show you that. So you can see like a chrome driver is extending to chromium driver, and chromium driver is the एक्सटेंडिंग टू द रिमोट वेब ड्राइवर। सो इससे क्या होता है कि सारा मतलब पेरेंट्स का सारा मेथड का एक्सेस चाइल्ड को मिल जाता है। सो क्रोमियम ड्राइवर के अंदर भी जो ड्राइवर रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। एंड या सो ये हुआ आपका ब्राउज़र रिलेटेड। सो I think now you got the all the hierarchy how it is related. So let me summarize you that. सो ये रहा हायरार्की अपना। सो हमारा सबसे पहले क्या आता है, सर्च कॉन्टेक्स्ट आता है। ओके, सो सर्च कॉन्टेक्स्ट क्या है? सो एक टॉप लेवल इंटरफेस है एंड जो सिर्फ एलिमेंट ढूंढने का मेथड प्रोवाइड करता है, जैसे कि फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स। लेट मी वन सेकेंड शो यू दैट सर्च कॉन्टेक्स्ट। या सो ये क्या करता है, दिस इज ऑल एन इंटरफेस एंड इसका काम सिर्फ है एलिमेंट ढूंढने के मेथड्स को प्रोवाइड करना। फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स। तो फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, तो ये भी इंटरव्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो फाइंड एलिमेंट रिटर्न द वेब एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को ढूंढ के रिटर्न करता है। बट फाइंड एलिमेंट्स जो क्या करता है, फाइंड एलिमेंट्स इज रिटर्निंग द लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। ओके, सो ये मल्टीपल एलिमेंट को ढूंढता है और फिर रिटर्न करता है। तो दिस इज द सर्च कॉन्टेक्स्ट। सो सर्च कॉन्टेक्स्ट का काम सिर्फ एलिमेंट ढूंढना है, नथिंग एल्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, what is a WebDriver. Okay, so WebDriver is also an interface which is extending the search context, and WebDriver इंटरफेस सर्च कॉन्टेक्स्ट को एक्सटेंड करता है और ब्राउज़र कंट्रोल के लिए बहुत सारे मेथड को ऐड करता है। इसके इनसाइड द मेथड बॉडी इज़ डिफाइंड, एक्चुअल कोड इज़ नॉट देयर बट मेथड बॉडी इज़ डिफाइंड टू कंट्रोल द ब्राउज़र। ओके, जैसे कि नेविगेशन कमांड हो गया, गेट करेंट URL, गेट टाइटल, गेट पेज सोर्स या ड्राइवर डॉट गेट नेविगेशन कमांड्स। So these all are defined in the WebDriver interface, and these also have some extra methods which is inheriting from the search context, like the find element and the find elements. Okay, the third is remote WebDriver. सो रिमोट वेब ड्राइवर क्लास क्या है? सो रिमोट वेब ड्राइवर एक कंक्रीट क्लास है जो वेब ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। दिस इज इम्प्लीमेंटिंग द वेब ड्राइवर इंटरफेस। लेट मी शो यू दैट रिमोट वेब ड्राइवर ना, या क्रोमियम ड्राइवर, रिमोट वेब ड्राइवर। या सो रिमोट वेब ड्राइवर एक कंक्रीट क्लास है, यू कैन सी लाइक इट्स एन क्लास and it's implementing the WebDriver. Okay, so WebDriver इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है और ये सभी ब्राउज़र ड्राइवर्स का पेरेंट क्लास होता है। यू कैन सी लाइक सभी ये ब्राउज़र ड्राइवर का जो है पेरेंट क्लास है रिमोट वेब ड्राइवर, ChromeDriver, Firefox, SDET, Safari। बट ChromeDriver एंड SDET बोथ आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द Chromium driver। इसके बीच में एक इंटरमीडिएट क्लास होता है सिंस बोथ ब्राउज़र आर Chromium बेस्ड। यू कैन सी लाइक दैट। एंड देर आर सम ब्राउज़र स्पेसिफिक ड्राइवर्स, जैसे कि ChromeDriver हो गया।
सो क्रोम ड्राइवर्स अपने को चाहिए होता है हर कोई भी ब्राउज़र में आपको टेस्ट रन करना है तो लाइक यू नीड ए रेस्पेक्टिव ड्राइवर कॉल्ड द क्रोम ड्राइवर एग्जीक्यूटिव फाइल फॉर द chromium base engine. For edge driver you need for the chromium base engine, but ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एज ड्राइवर इसको बोलते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड होता है. फायरफॉक्स हैविंग द ओन ड्राइवर like Gecko engines, so required a Gecko driver executive file, and other is like the Safari. So Safari is Mac OS only, so Safari सिर्फ Mac OS पे चलती है. सो बिल्ट इन सेपरेट ड्राइवर डाउनलोड नहीं चाहिए इसके लिए. सो इसका इंजन जो है काइंड ऑफ वेब किट इंजन इसको बोलते हैं, जो कि एप्पल खुद प्रोवाइड करती है. ओके, so now the question, I think you got the hierarchy, all the details. So now let me explain the code in the high level. I will be explaining. So when you are writing the WebDriver driver is equal to new ChromeDriver, so ये क्यों लिखते हो आप? तो डायरेक्ट हम ChromeDriver driver is equal to new ChromeDriver क्यों नहीं लिखते हैं? ओके, सो इसका आंसर है, अगर शॉर्ट में दे तो क्रॉस ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, आप देख सकते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन हियर एज वेल इन द शॉर्ट. सो अगर शॉर्ट आंसर की बात करें तो ये क्रॉस ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी एंड द पॉलीमॉर्फिज्म इसका कॉन्सेप्ट है. सो अगर हम पेरेंट इंटरफेस वेब ड्राइवर का रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी लाइक we are not creating an object of the WebDriver, we are referencing to the WebDriver. Okay, and you cannot create an object of WebDriver. So अगर हम पेरेंट इंटरफेस WebDriver का रेफरेंस यूज़ करते हैं और हमारा स्क्रिप्ट किसी स्पेसिफिक ब्राउज़र से बाइंड नहीं होता है, अगर रिक्वायरमेंट क्रोम की है तो हम न्यू क्रोम ड्राइवर पास करेंगे. कल अगर हमको फायरफॉक्स चाहिए तो हम फायरफॉक्स सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर कर देंगे यहाँ पे, बाकी कोड सेम रहेगा. इससे हमें क्या होता है कि जावा में अपकास्टिंग कहते हैं इसको. सो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अप्रोच है फ्रॉम फ्रेमवर्क डिजाइन के लिए. So this is all about, if you write and like a WebDriver is an interface, so you cannot create directly an object of the WebDriver. If you try to create, it will throw an error. WebDriver is equal to new WebDriver. See, like it's throwing an this one error, like a WebDriver is an abstract, cannot be the instantiated. सो WebDriver एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, एंड दिस इज एन इंटरफेस. ओके, सो या दिस इज ऑल अबाउट द this video, and now at the end, I think you understand all the things. So now question is like, why we are doing these things, right? So इसका बेनिफिट है कि इंटरफेस सेग्रीगेशन, सर्च कॉन्टेक्स्ट को वेब ड्राइवर यू कैन सी लाइक एक्सटेंडिंग. सो इससे क्या होता है कि सर्च कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड द एलिमेंट फाइंडिंग कैपेबिलिटी एंड दैट बोथ वेब ड्राइवर एंड द वेब एलिमेंट नीडेड, and WebDriver extends search context that adds the extra like a browser level operation on top of the search capabilities, like get method or any navigation method, and some other method related to the session or something. And इसका की बेनिफिट है, वेब एलिमेंट कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सर्च कॉन्टेक्स्ट टू फाइंड द एलिमेंट within the element. So you if you want to directly reference to the grain parent like a WebDriver ka parent, then you can do that, but you will not get the browser level like action method. You will only get these two, find elements, but it's recommended always use this WebDriver driver that
रिस्पेक्टिव ड्राइवर का क्लास, लाइक क्रोम ड्राइवर यूज़ कर रहे हो तो क्रोम ड्राइवर, एंड फायरफॉक्स है तो न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर. एंड नाउ इफ़ यू विल do the driver object dot get, so you will be getting these many, like on top of the find element and the find elements, you will get these extra browser control related methods as well. And now coming to the remote WebDriver, so now question is, why not directly implementation in the, not in the driver respective driver class? Why it is all the code written inside the remote WebDriver? So remote WebDriver contains all the common logic for all the browsers, because इससे क्या होता है कि हमारा एक जो है कॉमन प्लेस पे सभी ब्राउज़र के स्पेसिफिक जो कोड लिखा होता है. इससे हमारा क्या होता है कि हम अगर एक बार कोड लिखते हैं तो हर जगह पे वो यूज़ कर सकते हैं, हर ब्राउज़र के स्पेसिफिक. अगर हम डायरेक्टली हर ब्राउज़र का कोड अलग अलग में लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें अगर किसी रिक्वायरमेंट में अगर दूसरा ब्राउज़र में टेस्ट रन करना है, देन वी हैव टू चेंज एवरी प्लेसेस लाइक द रेस्पेक्टिव मेथड हमें लिखना पड़ता है. बिकॉज अगर मान लीजिए कि कोई क्रोम का मेथड फेल हो रहा है या नहीं एग्जिस्ट है, देन वो काम नहीं करेगा फायरफॉक्स या एज में. बट एक कॉमन प्लेस पे है तो रिमोट वेब ड्राइवर में है सभी कॉमन कोड्स लॉजिक, तो सभी जो रिस्पेक्टिव ब्राउज़र है इसको एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं. तो ये that's the reason all the common code related the WebDriver is inside in the remote WebDriver. And how they are communicating, so it's communicating through the respective protocol, like a JSON wide protocol, yeah, W3C protocol, web protocol, like a Chrome is currently communicating via W3C web protocols. एंड इसका जो है क्रोम फायरफॉक्स एज ऑल शेयर द सेम कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स. एंड फ्लेक्सिबिलिटी होता है इससे, कैन वर्क विद द लोकल एंड द रिमोट और सेलेनियम ग्रिड. बिकॉज हमारा तो रिमोट वेब ड्राइवर ही, जब आप रिमोट में टेस्ट रन करते हो, दे डू नॉट हैविंग एनी ड्राइवर एग्जीक्यूटिव फाइल, डायरेक्टली दे आर यूजिंग द रिमोट वेब ड्राइवर, एंड they are executing all the common functionalities in the Selenium grid via the remote web drivers. And yeah, so ChromeDriver Firefox driver is a class that adds the browser specific initialization and features, like आपको headless mode में चलाना in the your local, then they are providing the Chrome dot options. Or if you want to do some browser specific things, you can do that. Okay. And each driver manages its own browser driver service, like the Chrome driver is managed by the Google. Firefox Kiko driver is managed by the Firefox. So direct Selenium बस वो हमें कोड प्रोवाइड करता है, बट कम्युनिकेशंस के लिए हमको ब्राउज़र को के थ्रू हम एक्शन यूआई में करते हैं, राइट. सो दैट थिंग्स इज हैंडल बाय द रेस्पेक्टिव कंपनी. Selenium is not handling those things. एंड ब्राउज़र स्पेसिफिक API भी होता है, जैसे क्रोम डेव टूल्स फॉर द क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स प्रोफाइल्स फॉर द फायरफॉक्स. एंड हाउ इट वर्क्स, I already explained, like whenever you are writing the WebDriver, driver is equal to new ChromeDriver and driver dot get like google.com. so ChromeDriver क्या करता है, receive the calls, and ये क्या करता है, अपने पेरेंट्स को पास कर देता है, because this doesn't have any the action related to the code. So it passes to the remote WebDriver parent class, and remote WebDriver converts to JSON command and sends to the Chrome driver executive. अगर Chrome browser यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो Chrome driver executable file via HTTP. एंड नाउ द क्रोम ड्राइवर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल लेता है क्रोम ब्राउज़र पे, एंड द क्रोम ब्राउज़र जो है रेस्पेक्टिव यूआई एक्शन परफॉर्म होने लगता है. और वंस द यू एक्शन इज परफॉर्म, देन ये जो है रिस्पॉन्स जो है भेजता है वापस इसको. नाउ दिस इज द थिंग्स, एंड यू कैन सी द सम use cases like the cross browser testing,
रिमोट टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, ब्राउज़र स्पेसिफिक फीचर्स क्या होता है, एंड द एलिमेंट फाइंडिंग सर्च कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं. So yeah, so these are the key benefits, like the you know the OOPS concept, right? So polymorphism, so you can write the once and run on any browser. And abstraction, hide complex protocol communication. You don't need to know how it is communicating. Just you have to write the respective initialize the respective browser object, and you have to use. You not need to worry about how this communication is happening. Third thing is like the maintainability. Common code in remote WebDriver, specific code in driver classes, it is easy to maintain. Like अगर एक जगह कुछ break हो रहा है, then you have to fix in the remote WebDriver, and it will work for all the browsers. Extensibility, like inheritance, easy to add a new browser drivers. अगर कल एक नया ब्राउज़र इन्वेंट होता है, लेट्स से परप्लेक्सिटी, ओके, they are introducing own browsers या ChatGPT, so they do not need to worry about the how they will use for the automation. They only have to extend the remote WebDriver, and they have to provide some communication. They have to send back the response to the respective web browsers, and yeah, that will work like all other browsers. Testability, you can mock the WebDriver interface for unit testing, and yeah, you know, like through the Selenium grid or something. There are third party tools also you can run on the remote, and yeah, directly you can run this code in your local as well. So this is all about this video. I hope you got all the context about the Selenium hierarchy. सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्च कॉन्टेक्स्ट से लेकर क्रोमियम ड्राइवर तक डेटा कैसे फ्लो होता है. इंटरव्यू में जब ये क्वेश्चन आए तो कोशिश करें कि आप एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने का. सो एक डायग्राम वाइट बोर्ड पर ड्रॉ कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट में इट लिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशंस. सो अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लोकेटेड स्ट्रैटेजी के बारे में. So subscribe this channel for more technical deep dives. See you in the next one.